sorry to inform you all that I've started uploading YouTube videos such a long time back, and this would be my third video on my YouTube channel. So we are going to start reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. What do you mean by adolescence? Adolescence is the transitional period in which a body undergoes mental and physical development under sexual reproductive system maturity is called adolescence. So we will read about adolescence in deep in S. Chan publication through S. Chan publication. So we will not read the introduction part. It is not such important. We will directly come to the topic adolescence. So what does the topic says? Growing up is a natural process. We all know that growing up is a natural process. It does not require time to time vaccinations. Growth begins from the day a baby is born, and growth does begins when a baby is born. A baby grows and becomes a child. A baby grows and becomes a child. What is a child? A young human being being below the age of full physical development is called a child. When a child crosses the age of 10 or 11 years, there is a sudden spurt in his or her body growth, which becomes noticeable. Which is noticeable means what is the growth spurt in boys, that boys will develop more muscular body, they will have facial hair, the reproductive parts will enlarge, and etc. In girls, the breast becomes large, hips broadens, and the body becomes thin and silly. The rapid changes which brings place in a body which changes this age onwards are called growing up. These changes indicate that the person is no longer a child, but he or she is become an adult. A mature human being who is fully grown and developed is called an adult. A mature human being, वो आदमी जो हर तरीके से grow कर चुका है, that is not known as adult. What is adult? What is child? These two are very basic questions. Not important, but basic questions. I have already defined the adolescence. Again, I repeat once again. The transitional period of physical and mental development which occurs between childhood and adulthood is called adolescence. We can also add the period of life when a person undergoes a lot of changes, including reproductive maturity, is called adolescence. So these both definitions are important. Now, adolescence usually begins around age of 10 or 11 years and lasts up to 18 or 19 years. It usually starts when a person is 18 to 19 years. It ends when a person has fully maturely grown to become an adult, from a child to an adult. And when the period starts, it starts at 10 and 11 years. A person who is in the process of growing from a child to an adult is called adolescent. For example, the teenagers are called adolescent. Why we name it teenagers? Because there are 13 to 19 years of differences. That's why we usually come across this word teenagers. We usually prefer teenagers instead of adolescent because it's usually procrastinates. So adolescence, what is the basic? I'm not saying the appropriate, but the basic difference for Viva is adolescence is the time between childhood to adulthood,
But what is puberty? Puberty is the time when a person becomes sexually mature. He or she becomes sexually mature. Although a baby is born with full sets of reproductive organs, these organs do not function during the first 10 or 12 years. Under influence of hormones produced in the body, the reproductive organs become active at the time known as puberty. In other words, the reproductive system of humans, boys and girls, starts functioning at the time called puberty. At puberty, sex hormones begins to produce. What is gametes and sex hormones? Sex hormones are in males, the testes secretes the sex hormone testosterone, and in girls, estrogen or estrogen. Just we need to add estrogen ke aage O. Both are same. So the correct definition of puberty is the period during which adolescent boys and girls become sexually mature. The period during which adolescents, boys and girls become sexually mature is called adolescence. This definition is important. So I think we shall do something. I will create a chart for you all and I'll pin up in the chat box, comment box, and also in the description for a kind revision. Okay. The various changes which occurs in a boy are as follows. Hair grows on the face, or we can say mustache, beard, chest, stomach, legs, hands. What are those names as? Facial and bodical hair. Okay, voice deepens. Hoarse voice हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फटा आवाज. Hoarse voice. Testes starts to make sperm. Testes and penis becomes larger. These two both are sex organs. Chest and shoulders of the boys become broaden हो जाता है, wider. जिम जाने लगते ना. Body becomes more muscular, as I said. Hair grows in armpit and pubic region. What is pubic region or genital area? Genital area between the thighs, or in simple words, area around your sex organs. Both in girls. This characteristics is applicable or is defined in both girls and boys. Changes. Rapid increase in height. This too. Girls also suffer with rapid increase of height. Feelings and sexual drives associated with adulthood begins to develop. And what happens? Feelings, emotions, intellectual emotions and understandings of one another drives from this period, puberty. So this is a stage of a boy and girl to choose a correct path. Now, what are the various changes which occur in girl at puberty? These are the various changes. Breast develops and enlarges in girls. Ovaries starts to make release eggs या ova plural form है ovum का. Okay. Menstruation period starts to begin, or periods or monthly periods. Why it's happened? Because the egg is not fertilized. Ova is not fertilized. We will deal with this in all cases in our further videos. So kindly like, subscribe and do comment. Ovaries, oviduct, uterus, vagina all enlarges. These all are girls' reproductive organs. There are more. Hips of girls broaden or wider. Extra fat is deposits in hips and thighs. Hair grows in armpit and in pubic region. Same with boys. Genital areas में. What is genital area? The areas between the sex organs. The area around the sex organs.
जहाँ 6 ऑर्गन्स रहता है वहां पे बाल उगता है. Rapid increase in height. Okay, same with feelings and sexual drives associated with adulthood begins to develop. Okay, same with boys. All the changes which occur in boys and girls at puberty are brought by various hormones. And ये खेला क्या चीज का hormones का? These all are role played by hormones. Hormones are have a great initiative activities in making us from infant to a big adult. So we will come at changes at puberty. I will not deal with too much with these because these are not important topics. As Chan publications usually gives a very deep explanation which can make a child understand through its own. So I will just read the headed letters, and that would be enough for understanding because those are important points which the publication has made it black-headed. Puberty begins. Okay, sorry. Puberty marks the beginning of reproductive period when one becomes capable of reproduction. Okay. Puberty वो period बनाता है, वो period बन जाता है जब एक person becomes capable for reproduction. Because why it becomes capable of reproduction? We are just dealing in our previous video. Because 6 hormones. What are the 6 hormones? What are the 6 hormones? Testosterone and estrogen. Okay. These two begins to produce. From where? From gonadotropic hormone. These two hormones, testosterone and estrogen, is controlled by gonadotropic hormone, and the gonadotropic hormone is controlled by puberty gland. We will discuss in further videos. Indeed, the most conspicuous change clearly visible during puberty is sudden increase in the height of boys and girls. Yeah, we all suffer with this case. Alright? Initially, girls grow faster than boys. और हम लोग जानते हैं लड़की लोग ज़्यादा जल्दी उगती है लड़के लोग से. The rate of growth in height varies in different person. Or growth of height varies in different person. Why? Because of genes, hereditary problems. If someone's parents is a dwarf, child may be a dwarf. If the mother is not a dwarf. Are you getting the point? If the father is a dwarf, अगर उसके पापा बौने हैं, then the child may be a dwarf. हो सकता है वो भी बौना निकले. अगर उसकी मम्मी dwarf नहीं हो, वो बौनी नहीं हो. ठीक ना? And this is a chart which shows percentage of full height in boys at different years or ages. When a boy is at 8 year, 72% in boys. मतलब जितना जैसे 90% a boy will grow, तो 100% a boy will grow till कितना? मतलब 3 feet, 4 feet maximum. New generation, this is going in trend. Boys and girls are not growing tall enough. So this chart is not important so much. Now this is the sex ratio which is found by Mandal Commission in 1931. Okay. This is also not important. This is extra given because in NCERT these all are not given. So it's not important to revise. Now changes at puberty we have already deal. What are the changes at puberty? When puberty sets in a time, a rapid change in the body shape and appearance starts in the boy and girl, which make the boy and girl look different from one another. You can see जब हम लोग बचपन में थे, जैसे हम लोग के स्कूल में कोई प्रोग्राम्स होता था तो हमारे टीचर्स हम लोग को बॉयज़ को भी क्रीम्स एंड पाउडर्स एंड लिपस्टिक्स लगा के गर्ल्स के थ्रू बना देते, गर्ल्स जैसा बना देते थे. तो जैसे पार्टिसिपेंट्स का कोई एब्सेंस हो जाता था तो ये लास्ट मोमेंट में क्या जा सकता था, ये दोनों के बीच में हम लोग कर सकते हैं. सॉरी, ये दोनों के बीच में हम लोग कर सकते हैं. क्या ये पॉसिबल है ये दोनों के बीच में करना?
this boy can be converted to a girl? It's totally no. It's totally no. It can be converted. Yes, it is yes. But it's totally no. Because we know that boys develop their body more muscular than girls. You can see these portions are too much muscular. But the girls have portions in hand not that much muscular. Girls grows their breast more larger than boys. Boys have facial hair, but girls do not develop facial hair. There's a lot of changes which cannot be compared as in boy to a girl. Okay. So we are going to read only 6 points that basically changes a boy from a girl. Boys develop broadened shoulders and wider chest than girls. Boys छाती लंबा हो जाता है. Okay. Girls develop broadened hips than boys. Girls hip में हम लोग पढ़े ना that वहाँ जाके ज़्यादा fat stored हो जाता है hips and thighs में, इसलिए girls का hips तो broadened रहता है in compared to boys. Boys develop more muscles than girls. Boys develop more muscular means muscular body होता है. Simple. ज़्यादा ये hard chapter नहीं है. If you compare with yourself, then it's very easy to understand. Girls develop breast. Boys develop Adam's apple. What is Adam's apple? This. The portion, the bulge out portion which comes in the throat is called this Adam's apple. There's a very foolish kind of story in Adam's apple. Okay, we will read that story. Boys develop facial hair, mustache, and facial hairs in chest, beard. Change in voice. Why there is a change in voice? Girls have high-pitched voice, whereas boys have flat and flutty voice. Why? Because boys have hoarse voice, phachawa awaz, bhari. Why this happens? Because the vocal cord size in girls are very big. Okay, the big vocal cord, the big voice box in girls enables them. The smaller vocal cords in girls enables them to have high-pitched voice, whereas the bigger voice box in boys gives deeper voice or low-pitched voice. See, Adam's apple. My God, this Adam's apple. See, this is Adam's apple. The bulge out portion. अभी इसका कहानी हम लोग पढ़ते हैं. Adam's apple is formed in the growing boys. It's called Adam's apple. Yeah, an Adam's apple. The story of Adam, the first man created by God, Adam and Eve, the first woman created by God, described in Bible means you described है, in which Adam ate a piece of forbidden fruit apple in the Garden of Eden, which got stuck in his throat, and an Adam's apple sometimes looked like a small rounded apple just under the skin of the front of the throat. Thus, Adam's apple is featured in the throat of the neck of growing up boys, the bulge portion in the throat or the neck. कहानी में यही बताया गया है मित्रों, कहानी में यही बताया गया है कि एडम्स एप्पल कैसे हुआ था. जब एडम जो पहले इंसान थे गॉड के थ्रू क्रिएटेड, एंड ईव जब वो लोग ईडन के पास, ईडन एक शैतान के बगीचे में सेब खाए थे तो उनके गले में वो अटक गया था. देखो भाई कैसे खाए थे हमको भी नहीं मालूम, गले ही में अटक गया था. गला में ऐसा अटका कि उनका गला गोल हो गया था, तो इसीलिए हम लोग के गोल ये एडम्स एप्पल को वो नाम दे दिया गया.
बल्जर पोर्शन को नाम देने वाले का है। Development of pimples, acne on face. Acne on our face. Teenagers usually suffers with this problem. You, I, my brother, your sister, everyone in teenagers suffer with this problem. Development of pimples, acne on our face. So we are suffering, we should know how it occurs, how it forms, and what are the problems created by them. Okay. How it forms, what are the initiative taken by somebody to form this one. What are those? Those are bacteria in simple words. So let's come on the topic. Pimples are the small red spots on the face of a person, but acne is an outbreak of too many pimples at a place at a particular space, which accommodates and causes a red bloody on the face, which is called acne. सेबेसिस ग्लैंड, बहुत सारा ग्लैंड है बॉडी में, एक ग्लैंड का नाम है सेबेसिस ग्लैंड जो सिक्रीट करता है सेबम ऑयल और सिंपली ऑयल थ्रू द, वो क्या करता है, जो वो सिक्रीट करता है ऑयल, वो स्किन को लुब्रिकेट बना देता है, लुब्रिकेट, ओके, स्लिपरी, एंड प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ स्किन, और वो प्रोटेक्ट करता है सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है. Sebaceous gland is commonly known as oil glands. Sweats are the tiny glands on the skin which secretes pasina or sweat. All knows that what is sweat. Ashana. So I will not read this paragraph. What I know about this, I will say. What happens? Pimples and acne are formed due to the increased activity of sebaceous glands, sweat glands, and the dead skin cells in the skin. Dead skin cells. What happens? The increased activity of sebaceous gland make them produce more sebum oil, and the increased activity of sweat gland make them secrete more sweat, which initiates with the dead skin cells of the face and the accumulation of sebum oil or simply oil, sweat, and dead skin cells in the tiny pores of our skin, which covers a block and covered the tiny pores of our skin. When bacteria grows in this mixture क्या चीज का, sebum oil, sweat और dead skin cells के mixture में जब bacteria grows होता है, this led to the formation of pimples, rising of the skin, swelling and redness. This is called pimple, and the outbreak of too many pimples clogged together in our face is called this acne. Development of sex organs. Testis begins to produce male sex cell. सेक्स सेल है, देखो सेक्स हार्मोन हो गया टेस्टोस्टेरोन, सेक्स सेल हो गया आपका स्पर्म, सेक्स सेल को हम लोग गोनाड भी कहते हैं. ओके, the testis begins to produce male sex cell called sperm at puberty, and the female ova or ovary. Ovaries produce ova या ovum. Mental, intellectual, emotionals are not important, but we will read. इस एज में आदमी का शारीरिक दिमाग बहुत काम करता है. We become intellectual, mentally and emotionally becomes mature. हम लोग इस समय अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं. Adolescent boys, that's one life जब ब्रेन के पास ज्यादा कैपेसिटी होता है सब चीज याद करने का, सब चीज रखने का दिमाग में. इसीलिए हम लोग को इस टीनेजर्स में बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन का एक कैपेबिलिटी हो जाता है कि हम लोग ज्यादा चीज स्टोर कर सकते हैं अपने ब्रेन में. The changes which takes place in the body and mind during the adolescence are natural part of growing process. Every human being has to pass through this. Our parent, मतलब हमारे मम्मी पापा भी पास किए, हम लोग भी पास करेंगे, हमारे आने वाले जनरेशन भी पास करेगा.
फुलिश. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन. अगर आपको चाहिए कि हम और डीप एक्सप्लेनेशंस करें इस रविश टॉपिक्स पे, तो आप हमें बताइए, मैं मेहनत करूंगा, इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा. लेकिन ये सब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना इम्पोर्टेंस हम लोग वही चैप्टर्स को देंगे जिससे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं. जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंसेस बताइए, हार्मोन्स, यहाँ से आपका सारा इंपॉर्टेंस शुरू होता है. फिर बीच में हम लोग का फिर आ जाएगा मिथ्स एंड ताबूज, वो भी आप लोग का इम्पोर्टेंस नहीं है उतना. लेकिन हाँ, फिर चाइल्ड मैरिज सब इम्पॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी ऑफ चाइल्ड, ये सब इम्पोर्टेंस है. adolescent pregnancy सब importance है, ठीक ना. My God, 5 minutes हो गया. The sexual characteristics which are present at birth are called primary sexual characteristics. They are mainly involved in the reproduction, penis, testis, seminal vessels. ठीक है. हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डीप डायग्राम देखेंगे. एशांत हम लोग को बहुत अच्छा डायग्राम प्रोवाइड करता है, हम लोग उसको देखेंगे. जो हमारे बर्थ से जन्म ज्योति से रहता है हमारे साथ, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. इन गर्ल्स आर ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वेजिना. ठीक है. The secondary sexual characteristics controlled by the hormones which distinguishes our sexually mature male and a female is called secondary sexual characteristic. ये एक sexually mature मतलब प्यूबर्टी में आ गए हो तो सेक्सुअली मैच्योर तो हो ही जाओगे, एज वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ प्यूबर्टी, है ना. तो वो डिफरेंशिएट करता है, ओ ये लड़का ये लड़की है. यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे. जो हेयर ग्रोज होता है बॉयज में, यही है सेकेंडरी सेक्सुअल, और कुछ नहीं है. गर्ल्स का ही बॉर्डेंस होता है, ब्रेस्ट इनलार्ज होता है, बॉयज का बॉडी मोर मस्कुलर होता है, यही है और कुछ नहीं है. एडम्स एप्पल होता है. फिजिकली, ओनली फिजिकल वी विल रीड इन दिस टॉपिक. और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन से. चलो हम लोग देख लेते हैं. द मेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द बॉयज आर those are hair grows on face, facial hair मतलब shoulders and chest broaden, deep voice, Adam's apple, deep भारी आवाज, low pitched आवाज. Adam's apple के बारे तो हम लोग महान कहानी पढ़ ही लिए उनके बारे. चलिए, development in girls. What are the development of breast in girls? Hips get broaden हो जाता है hips, and shrill in voice. Shrill मतलब low pitched आवाज रहता है. बस यही सब है. अब hormones. What are hormones? Okay. Hormones are the chemical substances which coordinate the activities of the living organism, including human beings, are called, and also their growths are called hormones. हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड नहीं है. वो केमिकल कंपाउंड नहीं है जो हम लोग लैबोरेटरीज में देखते हैं. वो सब्सटेंस है जो बॉडीज के अंदर प्रेजेंट रहता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है, विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कंट्रोल करता है. ठीक है. द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स. डेफिनेशन समझ में नहीं आया? आई विल रिपीट अगेन, हम समझाते हैं. द हार्मोन, जो हार्मोन इन्वॉल्व है मतलब व्यस्त है इन द डेवलपमेंट ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बड़ी छोटे होने में जो इन्वॉल्व है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बियर्ड आने में, मुस्टैच आने में, गर्ल्स के ब्रेस्ट ग्रो होने में, उसमें इन्वॉल्व वो लोग सब सेक्स हार्मोन्स हैं. ठीक ना. जैसा बोले थे द 2 कॉमन सेक्स हार्मोन्स आर, व्हाट आर द 2 कॉमन? टेस्टोस्टेरोन इन बॉयज एंड एस्ट्रोजन. सॉरी हम गलती से हो गए यार. एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन या ओस्ट्रोजन, also spelled as ओस्ट्रोजन. ओस. Roles of hormones we will read in further classes. Glands and exocrine glands. ये भी और glands हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे glands के बारे में पढ़ेंगे.
नाम याद हो ही जाएगा अल्टीमेटली. A gland is a structure. A gland के बारे में definition. A gland is a structure which secretes a specific substance in the body. Okay? इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना इनका इन लोगों को. इम्पोर्टेंस है वो मैं अंडरलाइन कर ही देता हूँ, नोट्स के थ्रू तो भेज ही दूंगा. नेक्स्ट वीडियो से मैं इसके थ्रू नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है गूगल के थ्रू मुझे पढ़ाने में, मैं इसका एक पीपीटी बना के रखूंगा, उससे पढ़ाऊंगा. ओके. A gland which secretes its products into duct or a tube is called exocrine gland. So gland are having ducts. Ducts का मतलब एक duct रहता है. This is salivary gland. Salivary gland secretes its product saliva in the salivary duct. Saliva का एक duct, salivary gland का एक duct है salivary duct. Simple. उसी तरह हम लोग का sweat gland भी रहता है, sebaceous gland. मतलब ये आपका समझ लीजिए ये उसी पार्ट्स में जाएगा and shows the action there in which or it is not involved, exocrine glands are involved in showing or releasing or secreting in product in the duct. ये एक समझ लो तुम लोग सरकारी बस की जैसा है, ये बस की तरह है, ये प्राइवेट की जैसा है, प्राइवेट कार की जैसा. जैसे हम लोग घर से निकलते प्राइवेट कार में बैठे, हम लोग डेस्टिनेशन है रांची एयरपोर्ट, तो रांची एयरपोर्ट पास हम लोग डायरेक्ट जाएंगे अपनी कार से. लेकिन वही ये बस सिंपल है एक्सोक्राइन में. लेकिन एंडोक्राइन में क्या होता है ना, हम लोग है ना बहुत लंबा एंडोक्राइन में होता है, हम लोग डायरेक्ट रांची जाएंगे अपने एंडोक्राइन से. और जब बस में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वो बस तो हम लोग को एयरपोर्ट नहीं छोड़ेगा, वो बस हम लोग को रांची बस स्टैंड में छोड़ेगा. तो वो हो गया हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, वो हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड वहां बस से जाए, मतलब ये बस है और एक्सोक्राइन ग्लैंड प्राइवेट कार है, लग्जरियस है ना, वो डक्ट में जाके हम लोग तुरंत छोड़ता है. एकदम एग्जैक्ट जहां पे हम लोग को मतलब रिएक्शन शो करना है वहीं शो करेगा. लेकिन एंडोक्राइन का रिएक्शन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी शो करेगा. जैसे हम लोग का सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड वो जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट्स करता है, वो बस हम लोग का हैंड्स में नहीं शो करेगा. ग्रोथ हार्मोन हम लोग का दिमाग में भी ग्रोथ हो रहा है, चिक्स में भी हो रहा है, हैंड में भी हो रहा है, लेग्स में भी हो रहा है, थाइज में भी हो रहा है, तो वहां पे भी. तो ये हो गया हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन का डेफिनेशन क्या है? इट डज नॉट सिक्रीट इट प्रोडक्ट इन द डक्ट एंड सिक्रीट इज प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट दे देता है. तो ब्लड स्ट्रीम मतलब नर्व सेल्स में, नर्व्स में देता होगा तब ना नर्व सेल्स में जाता है, तब ना ब्लड स्ट्रीम में. तो ब्लड तो हम लोग के पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है थ्रू द पंपिंग ऑफ हार्ट. तो ये तो सारी जगह अपना इफेक्ट शो करेगा ना. दिस इज आई एम ट्राइंग टू से इन दिस एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड क्या देता है? इमरजेंसी इन वेरी मैक्सिमम पीरियड. Thyroid gland is responsible by thyroxine hormone. We will read about these. Role of initiating reproductive function. We will start this topic in our next class. So goodbye. Have a nice day. Thank you.